हेलो हाय नमस्कार बायोलॉजी विथ राजेंद्र को आपण समस्त को स्वागत। आज क्लास आम सेल जो अच्छे एमसीक्यू गुड़ा आम देखा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रो एमसीक्यू गुड़ा चलते स्टार्ट करवा। हु प्रपोज द सेल थ्योरी किए प्रपोज करते डार्विन ना सेल्डन एंड स्वान ना वाटसन क्रिक ना हुक एंड लियोनॉफ। ये चार भर करेक्ट आंसर कौन किए सेल थ्योरी डिस्कवर प्रपोज करते। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन बी सेल थ्योरी डिस्कवर प्रपोज करते सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन प्रपोज करते प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल किंतु स्वानटा प्रपोज करते सेम फॉर एनिमल माने सेल्डन कहते प्लांट आउ जो सचन कहते से एनिमल दे फर्मुलेट बेसिक सेल थ्योरी से समान सेल थ्योरी प्रोसेस करते फर्मुलेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर द सेल इन ए स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक एंटन वैन लीeuwenhoek और सेल्डन। ये चार ऑप्शन भर किए डिस्कवर करते सेल इन ए स्लाइस ऑफ कॉर्क। करेक्ट आंसर हूँ बी रॉबर्ट हुक डिस्कवर करते कौन सेल इन ए स्लाइस ऑफ कॉर्क से ऑब्जर्व करते थिन स्लाइस कॉर्क से कॉर्क से थिन स्लाइस गोटे माइक्रोस्कोप रे कवर करते के 1665 से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करते बॉक्स लाइट स्ट्रक्चर जोटा कि सेल डिस्कवर करते जो स्लाइस ऑफ कॉर्क डिस्कवर करते। द टर्म सेलटा क्या द्वारा कॉइन होता सचन सेल्डन रॉबर्ट हुक मिर्चो। ये चार भर करेक्ट ऑप्शन कौन हु कॉइन सेल टर्मटा किए रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल बिकज कंपार्टमेंट इन द कॉर्क रिमाइंडर ऑफ हिम स्मॉल ताको से छोट रूम रो जो रिमाइंडर देला से सेल बोली कही। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस की डिस्कवर करते रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक सचन लीeuwenhoek। न्यूक्लियस किए डिस्कवर करते न्यूक्लियस डिस्कवर करते रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल 1831 से प्लांट सेल डिस्कवर करते द न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल मेनी सेलुलर एक्टिविटीज बहुत बड़ा सेलुलर एक्टिविटी से न्यूक्लियसटा जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल करते से डिस्कवर करते से। ओमनियस सेलुला प्रपोज बाय ओमनिनो सेलुला ई सेलुलाटा क्या द्वारा प्रपोज होता सेल्डन विर्चो रॉबर्ट हुक ब्राउन। ये चार भर करेक्ट ऑप्शन कौन विर्चो रोडोल्फ विर्चो स्टार्टेड द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल रोडोल्फ विर्चोटा से डिस्कवर करते मॉडर्न सेल थ्योरी। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द जनरल कंसिडर्ड टू बी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बैक्टीरियम माइक्रोप्लाज्मा एमोइबा ना भाइरस। ये चार भर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन माइक्रोप्लाज्मा हूँ सब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइक्रोप्लाज्मा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन फॉर लिविंग सेल इट लैक्स ए सेल वॉल यार सेल वॉल न थाए लैक ऑफ सेल वॉल बट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली तार सेल वॉल न थाए किंतु से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करे। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन ह्यूमन आरबीसी ऑस्ट्रिक एग एमोइबा ना नर्व सेल। करेक्ट ऑप्शन हूँ ऑस्ट्रिक एग हूँ सब लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिक एगटा हूँ सब लार्जेस्ट सिंगल सेल। स्ट्रक्चर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल को स्ट्रक्चर एब्सेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना सेल वॉल। करेक्ट ऑप्शन हूँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस रे प्रोकैरियोटिक सेलटा एब्सेंट है। द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक्स प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल जो अच्छी प्रोकैरियोटिक प्रेजेंट कहाँ थे
न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोलस गल्गी बॉडी करेक्ट ऑप्शनटा होची कौन न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड एट्रियल क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन से तार नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक राइबोसोमटा केते 70s ना 80s ना 60s ना 50s कौन ए दुईटा तो हेनी ए दुईटा भर कह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कह करेक्ट ऑप्शन कौन 70s प्रोकैरियोटिक होइए हमर 70s राइबोसोम और जो यूकैरियोटिक होची यूकैरियोटिक होची हमर 80s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक 80s राइबोसोम जो कि हमर प्रोकैरियोटिक जोड़ा अछि 70s राइबोसोम से 50s प्लस 30s सब यूनिट मिसिकी 70s राइबोसोम हेतै यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम केते जस्ट कहते 80s राइबोसोम जोटा कि 60 प्लस 40s मिसिकी 80s दस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा अच्छे से क्या द्वारा माने को जिनस को नहीं कंपोज सेल वॉल प्रोटीन माने सेलुलर प्रोटीन ना लिपिड प्रोटीन ना काइटिन लिपिड ना डीएनए प्रोटीन क्या को नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा अच्छे कौटा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन करेक्ट ऑप्शनटा हूँ लिपिड प्लस प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन को लेकिन ही तैयारी जोटा कि फॉस्फोलिपिड जोटा कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं लिपिड प्रोटीन मिसिकी तैयारी फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज बाय वाटसन क्रिक सिंगर निकोसल सेल्डेन वन ना कौन करेक्ट आंसरटा सिंगर निकोलसन प्रपोज करते फ्लूइड मोजाइक वायरल जो मॉडलटा के 1972 से डिस्क्राइब करते मेन लिपिड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेन लिपिड प्रेजेंट होची कौन ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड स्टेरॉइड ना वैक्स चार भर कोड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन करेक्ट ऑप्शन होची फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन लिपिड हिसाब प्रेजेंट थे जोटा कि हाइड्रोफिलिक हेड फेस वाटर हाइड्रोफिलिक टेल फेस इनवर्ड द सेल वॉल प्रेजेंट मेनली कंपोस्ट ऑफ जो सेल वॉल प्लांट अच्छे से क्या द्वारा कंपोस्ट काइटिन पेप्टिडोग्लाइकन सेलुलोज ना ग्लाइकोजन मेनली क्या द्वारा था सेलुलोज द्वारा ही तार सेल तैयारी की मिडिल लेवल कंपोज ऑफ सेलुलोज कैल्शियम पेक्टेट काइटिन ना लिग्निन जो तार मिडिल लेवल अच्छे से क्या द्वारा कंपोस्ट करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम पेक्टेट द्वारा ही तार मिडिल लेवलटा कंपोज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट कौन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एडजेसेंट प्लांट सेल जोटा कि प्लाज्मिक बिटवीन नाइबरिंग प्लांट सेल दुटा नाइबरिंग प्लांट सेल जोड़ा थी भर जो कम्युनिकेशन कनेक्शन कर एडजेसेंट प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच ऑर्गेनेल सेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल इजी क्वेश्चन कौन गोल्गी एपैरेटस लाइसोसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया ना राइबोसोम करेक्ट ऑप्शन कौन हम माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्या कह माइटोकॉन्ड्रिया जोटा कि एटीपी प्रोड्यूस कर प्रोवाइड एनर्जी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ग्राना क्रिस्टी सिस्टम थायराइड कौन ऑप्शन क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्ड
इनवर्ड फ्रॉम क्रिस्टी रू फॉर्म करते जोड़ा कि फोड़ तार सरफेस एरिया एटीपी प्रोड्यूस करे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेंट डीएनए राइबोसोम ओनली प्रोटीन सेल्यूलोज क्लोरोफिल कौन डीएनए एंड राइबोसोम डीएनए और राइबोसोम से कंटेंट करे जेहेतु तार कि सर्कुलर डीएनए 70s राइबोसोम ऑब्वियस जो एंजाइम अच्छे से सब नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया तैयारी करते क्लोरोफिल कौटी प्रेजेंट थे मेसोफिल आम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम ना गल्गी बॉडी कौटी प्रेजेंट थे प्रेजेंट थे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मेन से क्लोरोफिल काम कौन से फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जोटा अच्छी जो थे तार फोटोसिंथेसिस कर फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट अच्छे से क्लोरोप्लास्ट मिलता है फोटोसिंथेसिस हेल्प कर लाइट एब्जॉर्ब करने स्टेक ऑफ थाइलाकोइड इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्रिस्टी ग्राना सिस्टर्नी मैट्रिक्स करेक्ट ऑप्शन होची बी स्टेक ऑफ थाइलाकोइड जोटा कि ग्रानम कहुए स्टेक ऑफ थाइलाकोइड कलेक्टिवली कॉल्ड ग्राना थर्ड fluid filled region chloroplast called as stroma which organelle is known as suicidal bag क्या कहे लाइसोसोम राइबोसोम पेरोक्सिसोम वैक्यूल परसेंट है लाइसोसोम को कौन पाई सुसाइडल बैग कहे तार जो इतने हाई पावरफुल कौन थे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे से सुसाइडल बैग कहे सुसाइडल बैग कहे लाइसोसोम कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ना क्लोरोफिल ये करेक्ट ऑप्शन कौन होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम Golgi apparatus mainly involved in protein packaging secretion. Golgi body discovered by Camillo Golgi. जोटा कि 1898 से डिस्कवर करते केबी करते 1898 मैडम एटा हচ্ছে फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक जोटा कि ताको सिस्टोनी कहे से डिस्कवर करते फ्लैटन सेल सिस्टोनी एबे जस्ट कहते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट कौन कंटेंट करे रफ एंडोमिज जोड़ा लाइसोसोम राइबोसोम सेंट्रियोल ना क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम smooth endoplasmic reticulum mainly associated with lipid synthesis ribosome are sites of protein synthesis ribosome are composed mainly of ribosome टा mainly कहा था composed DNA lipid RNA protein cellulose protein lipid and carbohydrate correct answer है dry RNA and protein membrane bound organelle responsible for intracellular digestion is जो membrane bound organelle responsible कहाँ है जो intracellular digestion अच्छी लाइसोसोम सेंट्रोजोम इज जनरली फाउंड सेंट्रोजोम तो जनरली कोटी फाउंड हुए एनिमल सेल रे बैक्टीरियल सेल रे ना मैच्योर प्लांट सेल रे ना वायरस रे सेंट्रोजोम टा मेनली एनिमल सेल रे फाउंड या सेंट्रोजोम कंटेन 1 सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल 4 सेंट्रियोल और नो सेंट्रियोल सेंट्रोजोम रे केते थे 2 सेंट्रियोल थे 2 सेंट्रियोल वैक्यूल प्लांट आर सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट वैक्यूल मेन फंक्शन कौन स्टोरेज मेंटेनेंस टगर जो टर्गर अच्छे टर्गर तार स्टोरेज और मेंटेनेंस करते प्लांट वैक्यूल which organelle contain its own DNA
କେଉଁ ଅର୍ଗାନେଲ୍ଟା ତାର ଓନ୍ DNA କଣ୍ଟେନ୍ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କଣ୍ଟେନ୍ own circular DNA. Which pair contain semi-autonomous organelle? Mitochondria and chloroplast. The nucleus primarily involved. Nucleus primarily involved कोड थे राइबोसोम फॉर्मेशन में। राइबोसोम फॉर्मेशन में nucleus यूज है। Nuclear envelope consists of single, double, triple codex, double membrane. Chromatin is composed of mainly chromatin टा DNA और protein रे कंपोजिट है जोटा कि हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे सेल डिवीजन हेल्प करे। कुछ सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन जो ड्रग्स रो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी से को सेलटा यूज है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोट्यूबुल टा मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्यूबुलिन, मायोसिन, केराटिन, ट्यूबुलिन. Microfilament are mainly composed of tubulin, actin, cellulose, myosin, actin. Microfilament मैं पतला है कि तेरे जो फाइबर कंटेंट था सेटा कंपोस्ट ऑफ एक्टिन रो कंपोस्ट था। तो सिलिया फ्लैजेला जोड़ा अच्छे से तारो अरेंजमेंट केमिति थे सिलिया फ्लैजेला अरेंजमेंट यूकैरियोटिक सेल अरेंजमेंट थे तारे 9+2 तारो टोटल जो 11 है 9+2 हिसाब से। Exonyma of cilia are flagellated composed of microtubules. जो तारो इंटरनल कोर था cilia और flagella. The cell wall of fungi is mainly made up of cell wall जो fungi रो cell wall अच्छी तारो कहाँ देती है सेटा अच्छी काइटिन देती है cell wall fungi टा काइटिन देती है। वो जो कोडा वित्रु membrane bound organelle नुह mitochondria, Golgi apparatus, ribosome, lysosome. Ribosome is not a membrane bound organelle. So it is non-membranous. This is non-membrane structure. As the last question, which organelles is responsible for modification of packaging and distribution of protein? Whose cell organelle टा responsible for modification, packaging और distribution? ये सब पाए प्रोटीन जो अच्छी तारो modification और distribution, packaging सब पाए को cell organelle टा important. Mitochondria, Golgi apparatus, ribosome ना peroxisome. Correct answer टा होची कौन है Golgi apparatus. Golgi apparatus responsible for modification, packaging and distribution of proteins. ऐसे वाला हमारो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट है। यदि क्लासटा भल लगी ताहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।